So to start with, I request my senior partner, Sri Vikas Gupta ji, to please formally welcome Vishal Doshi ji into our Saturday meeting, Saturday class. I am really thankful to Vishal Doshi ji for his valuable time. He has agreed for sparing his valuable time for this Saturday class for senior students. Sometimes back we were together in one of the bank audit seminar, so it's my privilege. We are again together on this online platform. So welcome Vishal Doshi ji for sparing your valuable time. Thank you. Thank you. Yeah, I request Saloni to please introduce Vishal ji. First of all, a very good afternoon, sir. First of all, I would like to thank Upendra sir for giving me the opportunity to introduce our today's guest speaker. Sir is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India and is engaged in the exclusive practice of auditing and assurance for 25 years. Sir is a very eminent personality in our profession. He is also the Central Council member at ICAI and also the Vice Chairman of the Auditing and Assurance Board of Studies and also the part of Expert Advisory Committee of ICAI. Sir has been part of various standing and non-standing committees of ICAI, and Sir has a strong belief in the capabilities of Indian Chartered Accountants and has contributed a lot to this profession. He is a subject expert in auditing and assurance and has an in-depth knowledge and insight in India's IFRS, auditing and assurance standards, ERM, and other non-technical subjects. Sir, I would like to welcome you on behalf of entire Kalani family to today's Saturday class. Thank you, sir, for being here. Yeah, so Vishalji, just to have an introduction of these Saturday classes, and since you are the torchbearer of our ICI, it is important to know you, know about this, because ultimately if something happens at our firm, we wish that this should happen not only in our firm, rather for the all
Indian Chartered Accountants firm. So that is the objective. I sometimes basically keep on calling our torch bearers also. So basically, for last more than 40 years, this Saturday class concept is there in our firm. So our earlier senior partners, late Sri CL Jawar Sahab, was used to take care of these Saturday class in his time, and this has been continued by other partners. And presently, firm has primarily responsibility has given this responsibility to me. So I keep on doing these activities, and this COVID has basically given an advantage that we have started it online, and ultimately a recorded version of Saturday class is always available on our YouTube channel. And purpose of the Saturday class is that whosoever actually enters into the accounting, chartered accountancy profession, he should basically improve his communication skills, his other soft skills through these presentations and regular updation of the subject matters. And many times you will not believe, like yesterday I have flagged an issue. So that issue basically I could not notice till I have not discussed it with Saloni yesterday almost at this time. So, so many times I believe that this updation happens because of the things which are being done by these students, and they bring something to us. So I would request you that wherever you are there in the institute's committees as well as any other forum, so please let's have such kind of system almost at every firm wherever it is possible, so that our ultimately see, these students are basically foundation of the accounting profession. So ultimately, if they will improve into their communication skills, probably we will have a better succession for ICI. So that is the purpose. I have invited you, and of course, you are being the SSB member and part of this particular guide, and not only the guide, various other publications of the ICI. So looking to the today's subject matter, you already possesses that expertise, and we rather now would like to hear from you on today's subjects as well as a small appreciation for our students. भूपेंद्र, मैं खाली एक ही चीज कहना चाहता हूँ। Yes. ओएनजीसी में हम 4 साल से हैं, कोई भी डिस्कशन ऐसा नहीं होता जहाँ विशाल जी का नाम नहीं आता है, तो ये विशाल जी का एक वो है, फ्लेवर है प्रोफेशन में। Thank you so much, Vikas ji, for those kind words. Thanks to Bhupendra ji that he thought me fit and invited me to witness this, I would say, a study session of Kalani and company that I would say is of the students, by the students, and for the students. So my compliments to all the students who are participating actively in these sessions. I understand these are weekly Saturday meetings that are held, and I, being chairman board of studies academy, I have always thought it our responsibility, not as a chairman board of studies academic, but as a professional, to invest in the future. Right, and I strongly believe the students are the future of our profession. अभी हमारा तो time निकल गया है. That is how I tell my students also. But you are the future, and the institute and the country looks upon you about whatever activities you do, wherever you go, you grow, and therefore it's always a pleasure to interact with these students. And I saw that there are 3 students who are going to make the technical presentations today. Pragya Agrawal, Saloni Gupta, and Darshan Jain. Correct me if I'm wrong, and pardon me also if I'm wrong, but my best wishes to all the 3 of them. That friends, even in our office, we do not have such frequent interactions, but what we do is every 6 months, we have one full day where we pick up a topic. And so it is like an offsite, not in office, not virtual. We especially now, so
There was a break in between for 2 years, like Bhupendra ji also mentioned. But what we also do, just to give an insight, that where we pick up a topic, let us say it is on direct tax. And it's a full day where we hire an auditorium outside, and students from all our offices, all locations, they all come to one place, either it is Baroda or Ahmedabad or wherever. And we have presentations at 3 levels. One is by partners, maybe a couple of topics which are interesting, or I would say which are a bit technical. Then we also have a couple of presentations by the managers, the qualified chartered accountants who are experts in those areas, whatever is the subject taken over. And then a post-lunch session is where the articles make the presentation from that platform on that topic of, let us say, direct tax, and then there are subtopics. So, every 6 months we change the topic, so that typically over a 3-year cycle, a majority of these areas for an article student gets covered by way of such interactions. And so I believe what Vikas ji and Bhupendra ji mentioned, that this is something that we need to take across the country. Definitely. And, I know students may not like the thought, but I'm saying this is just a thought. So don't start putting things on social media with my name and everything. सर आजकल वो बहुत डेंजरस हो गया है कि हम लोग मतलब कहीं पे भी फ्रेंडली डिस्कशन करते हैं तो कहीं और चला जाता है. So I understand that, there was a thought बीच में आया था that you're having a CP sort of a thing for students, where the number of hours, minimum number of hours, whatever it is, that for students also, where they attend such webinars or programs or conferences of the ICI and the Board of Studies, the academics or whatever. And so that gives them the platform, and where they are making presentations. In fact, I'll tell you, sir, one more thing, though I know I'm moving closer to my closing time, but in our office, what we do is we also encourage writing papers for the conferences. So I'll tell you what we have is that जो students conference हमारे बड़ौदा में होती है या कहीं पे भी होती है. So wherever the student writes the papers and submits it, we sponsor the student to that conference, wherever in the country it is. Right. And if that paper gets selected for a presentation, so उसको तो मिलता ही मिलता है encouragement and whatever felicitation that we do. But even those who submit the paper, क्योंकि वो paper लिखना, वो टाइम स्पेंड करना, उसमें रिसर्च करना और सबमिट करना टू द ब्रांच, टू द इंस्टीट्यूट, दैट इटसेल्फ इनवाइट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. और उसके लिए वी प्रोवाइड एडिशनल एनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट्स, दैट फॉर अदर्स वट एवर इज द फीस दैट द फर्म at the student shares, but in these cases we ensure that the student participation happens because they have walked that extra mile in submitting papers for the conferences. And because of which, sir, we have seen that from our office, participation happens in across India, whatever are the students conference, a maximum of the student conferences, students from our firm are normally there participating in one subject or the other. So I believe you would also be doing it, but when we exchange these thoughts, these ideas, I think firms like us, we are able to grow the students to a very high level, high pedestal, and students also feel very confident when they come and join our firms. So, again, it's a closed group. तो बोलते हैं that maybe you would also be facing that when the results are out, there would be a long queue of students wanting to become articles with your firm, as compared to many of our fellow brothers and sisters जो complain करते कि article नहीं मिलते हैं. तो we because of our policies and practices, that is what drives the student rather than anything else. So friends, once again, thanks for this invitation, and I'm extremely delighted. The topics that are up for discussion today, I believe, is the implementation guide on this Rule 11G that has come up, and also some other recent issues and challenges on the company audit with respect to FY 22-23 and 23-24. Since there are paper presenters, I would not dwell on the technical aspects too much in detail. I would not take away their share of the cake, to be honest, but I will just give some of my thoughts on these issues that are there. Friends, audit trail, 11G, typically we say audit trail, and audit trail is not a new terminology as far as chartered accountants are concerned. I still remember even during my initial articleship days, these words were, or these terminologies were used very frequently with respect to an audit trail.
Now it has become, I would say, part of the law becoming legalized, the whole audit trail aspect. But some things very important, and maybe which, and I always believe that the article students are the first brand ambassadors of CA firms like us, because you go on a daily basis, you interact with the clients whenever you are there at the audit place or whatever work you are doing, and your interaction with the client is more frequent than maybe at partner level, like where we interact with the respective client. And therefore, it becomes very important for the students that they go out and start educating the client. The firm definitely from its side would be doing its job. But as the articles, as the I would say front face before the clients, it becomes extremely important that you send across this message to the client. So see, one is the with respect to the audit trail, it would typically be a log, the edit log, which becomes extremely important, that when a transaction has been entered. So there are, I would look at it from two aspects. One is that the audit trail or that edit log or the log, I would say log or log, that should not be tampered with, so it has to remain in existence throughout the year for all the transactions that are being posted into the accounting system. And therefore, from an auditor's perspective, yes, we have to do those IT checks and those controls verification and all that is fine. But it becomes important that the system, the selection of the system, the audit or the verification of the system, that whether it is tamper proof or not, becomes the first and foremost thing. And I believe that as professionals, it becomes our responsibility also, and especially in cases of clients where they are not using the ERPs or the high-end tech softwares, to ensure that they are able to invest into such software, because now it has become a mandatory requirement. And second thing is that we also need to tell them that what would happen once these softwares, because that is a legal requirement that is there, that once it comes into force or once it is applied at the client's place, then what are the, I would say, the advantages of it, as well as the areas that needs to be looked into. So one is with respect to the dating of the entries, right? So you can have, I'm not saying that you have to maintain on a daily basis. Yes, that is what is expected, that you have to maintain the books of account on a daily basis. But then there are things like an effective date, which we have in the software. So you might enter a transaction, let us say dated 8th of April, but you want it to be posted on the 2nd of April, then you have an effective date where it takes effect from 2nd April. So these things are there, which would still get captured as far as the software is concerned. And I don't believe that anybody would say that it has to be on a real-time basis, that by end of the day, all the entries pertaining to that day should be posted. Even the ERP packages also do give that facility where you can have the effective date. But what happens many times is in softwares, we have seen that, let us say as an auditor, you have done an audit for a particular period. Let us say hypothetically, I'm saying from the period April to June. I'm not talking of listed companies where results are published and all. And after June, when you go and raise some audit queries where some rectifications are required. Now, normally what happens that many times you've seen that the client will go back to, let us say, 1st of May and change that entry, either change that entry, original entry, I would say they would go and enter and change that, or they would pass a rectification entry of the dated of 1st May. See, all these things would now get part of the recorded in the edit log, which would be available to anybody, because the regulations also mention that they have to be maintained for the retention period as that is required, that is period of 8 years, right? So for 8 years, whatever are the changes that are being made, they would all be tracked and be stored. So even in such cases, then we have to advise the client that for the period of April, May, June, typically all rectification entries may be passed on 30th of June. That is after the audit period is completed. The rectification entries may be passed subsequent to that. Another thing is that again, I would say when we do the audits, we sign off. Let us say, I'm saying again, let us a listed company where the board meeting, the audit committee meeting, and the sign off has happened. I'm saying, let us say by 15th of May. Now, technically, there cannot be any entries of March that can be passed after the sign off. That would violate all the standards on audit. And even as auditors,
We cannot allow that, because in our audit report also we are mentioning that the financial statements, they match with the books of account. Now, if those entries are not passed by the date of signing, then that statement in the auditor report itself, I believe that would be technically incorrect. And therefore, we also have to ensure that all the entries. So because why I'm saying this is that many times, entries are passed in the Excel file, financial statements are prepared, and then once everything is signed off and all, maybe the entries are passed in the books of account at a subsequent date after the board meeting. बोलते pressure बहुत है, अभी time नहीं है, अभी तो close करना है, board meeting का agenda ready करना है, और ये सब होता है. And I think Bhupendra ji and Vikas ji would agree to that, the pressures which are there at the last minute. But now I believe, this is again my belief, that once we sign off, all entries before sign off has to be there in the books of account. Otherwise, in the audit trail, if it is dated, so it might be effective date would be 31st March. Definitely the posting would happen dated 31st of March. But if the date of entry is post the sign off, I believe that might create an issue under the auditing standards also. So that was another thing which I just wanted to highlight over here. And coming to some other recent issues and challenges, friends, I think last year all of us have sweated a lot implementing the Schedule 3 and the CARO 2020. And I understand for this year there are no such major changes to be implemented. Whatever we have, even the recent changes to Ind AS is also for the 23-24 and including this audit trail. But I believe it is now the time to actually qualitatively reflect on the disclosures that have been made with respect to Schedule 3. And I'll just take a very simple example, which at that point in time also I had asked my team that with respect to the trade receivables, trade payables, the aging schedule, and the requirement of the bifurcation of the aging into, where you had the credit impaired, or I would say the increase in credit risk, and good. This is how I would say. Now, see, I always believe that there also a qualitative review as an auditor, as a team is required, because let us say, because all this would result in, a lot of documentation. So because, if you find that any company, they are saying that an amount, there is a significant increase in credit risk, and which is outstanding for more than 2 years as per that table, but no provision has been made, or no ECL provision has been made against that. Now that, as an auditor, see, normally we used to do as part of ledger scrutiny and all those things. I'm not doubting on that. But now what happens, all these forms part of the published accounts. And therefore, I believe this qualitative input also, we need to document that if there is a significant increase in credit risk, it is 2 to 3 years, then why no provision is made. And more serious would be that if it is a credit impaired and there is no, or I have seen cases also credit impaired is there, and there is no provision that is done. It might be in the 2 to 3 year bracket, or even in the more than 3 year bracket. Right, the company would have its own logic, its own argument. But I believe that as auditors, these are the things which we will now need to document on a more detailed basis, looking into the qualitative aspects of all these tables that are put in. Similar would be the case with respect to your trade payables also. So what I would request all of you friends is that don't just, when you're doing the audit, or I would say reviewing the financial statements, just don't look only from a compliance point of view. It is very important that as auditors, we do a qualitative review, that whatever numbers are coming, and that is where I would say you have to bring the auditor's nose into play, that you have to start sniffing at things. This is how I always say, and look beyond what those numbers are. You have to keep on questioning. I always many times tell my team that if you remember that movie of Paresh Rawal where he had a question mark on his forehead, as auditors, that is what we should always carry to our client's place, that for everything, we should have a question and question mark, and keep asking till you are satisfied that nahi, abhi hamare paas aur questions पूछने के लिए नहीं बचे हैं. That is the stage till which we need to do. And very important, I don't have any doubts about the
firm and the processes and systems, but very important, friends, I would say are the documentation, because if you look at the recent NAFRA, the reports or the the preliminary reports that have come, the QRB audit documentation is something which is very, very important and very, very significant. And Vikas ji would remember I had said in the bank branch audit seminar also that all of us should remember one thing when you are doing an audit, is that whatever is not documented is not done. I think this is the principle which we all need to follow. कि अगर document में नहीं है file में, मतलब ये नहीं किया है. You might remember everything, you might have it on the tip of your finger, numbers सब कुछ होगा, but वो document में नहीं है, मतलब आपने नहीं किया है. This is what you have to follow as a matter of principle. And therefore, what happens is that, see, many times what happens, we have the queries which we list down. So either in a computer होता है, hard copy होती, कुछ भी होते, mail करते client को. And normally what happens, clients बोलते हैं, okay, when you have time, आप आ जाओ, हम लोग discuss कर लेते हैं. वो discuss करके then we say, ठीक है, ये 15 queries है, 10 are solved, 5 की rectification हो गई, close, and we put it across. Now, how that has been resolved, actually that does not get documented. I am not saying that it is the queries would not have been resolved or would have been resolved incorrectly. They would have been resolved correct, but that is not documented. So raising of queries that documented, but solving the queries, or I would say resolving the issues, that does not get documented. So as far as an audit process is concerned, it is as good as the queries have not been resolved. So I think this is an area where all of us, we need to improve. I'm saying we always have a benchmark, especially with firms like you all, but we always need to see that there are areas for improvement. And I personally, I very strongly believe that documentation is something where we need to spend a lot of time collectively as firms, as chartered accountants, and have an independent review, the EQCR and an independent review. And I would say from our firm also, many times we call external reviewers, who no one, not peer reviewers, QRB kuch nahi hota hai, but just to see that our documentation is complete or not. We involve outsiders, professionals, chartered accountants to come and review our audit files once this season is over. So my request, friends, that please ensure that we keep documentation proper, do a qualitative review. And as students, I would say that, this is a beginning of the CA journey for you, and you have a very, very bright future. So my best wishes to all of you. And whenever you have any queries, I would say from the Board of Studies, we are always available. And one last thing to the firm. Sir, we also, from the Board of Studies, we do the practical training assessment test, which we carry out every quarter for level 1, level 2 for the students undergoing articleship. I understand आप लोग करते ही होंगे, but even our firm also, we have started monitoring the results of those PT assessment tests, where the students, and that gives a lot of insight. I believe as principals, it is our duty and responsibility to ensure that students not only pass the exams, but they become good professionals. And what we have started doing now, honestly, मैं बहुत frankly बोलूं, even I was not aware of this till I came to the Board of Studies last year. But then in our office, we have started this practice that we ensure that first year वाले जो भी eligible होते हैं, at least before, once they are eligible, they appear for this. Their results we share with our HR. They go through that, and wherever we feel that these are the areas they need to improve upon, as a firm, we focus on those students into that area so that we do proper hands-holding and they become successful and they are able to pass the exams. So once again, thanks for this invitation. I am really, really very happy to be part of this seminar today, and my best wishes to all the students and the firm. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Vishalji, for your nice presentation. And I request Bhupendra. In fact, I believe that Vishalji have another engagements related to Council Audit Quality, Center for Audit Quality. So would not basically, though there are a lot of things which are there to convey and give a detailed vote of thanks to you because you have actually mentioned so many things, not only about today's subject, but also regarding how do you actually train at your firm your students, and particularly this thing about monitoring results which are being for the tests which are being carried out by the Board of Studies.
So at our firm, we shall also certainly look into these things, and we'll try that how things can be actually improved so far as our students are concerned. So I'm sure certain students may have some queries also, but since time is not permitted, and if they have query for students, I have all the time, provided you have the time, because I know you also have a session to complete. So I leave it totally on you. 5-10 minute इधर उधर कोई problem नहीं है, but provided you have the time. So Saloni, do you have any query? Saloni and other speakers, as well as any participant? Yes, sir. Actually, sir, regarding audit trail, that Tally is now like providing the new facility about audit trail, edit log Tally 2.0, but still, sir, that is not properly suitable for the multi-user firm, multi-entities firms. So, sir, in that case, how can that client be satisfied, and how can they fulfill that audit trail feature so that their report is not qualified? No, so see that honestly, that interaction has to take place with the software vendor, because it is the client. See, if you read the IG also, it says that the primary responsibility of selecting the software is that of the client. Right, our role would not be in selection of the software. Yeah, we may guide, we might say that whether it satisfies the requirement, all those things is fine. But ultimate responsibility would be that of the management. And see, because I remember that initially Tally never had this feature till the first time this modification came. And I remember even from the institute, they had approached that how to go about it. And we had given them some inputs on areas about how the audit trail and everything can be done. But these things actually need to be flagged off with Tally, that for multi-location or multi-user, there are some bugs. I think they have actually gone a long way. They have improved. They have put in a lot of these features on the EL, especially the Tally EL, but that has to get escalated with Tally. Okay, sir. Thank you. So, Vishalji, thank you very much for being with us. And since our student speaker are starting with, you can just, if time permits, you can hear them for 2, 3, or whatever time you feel comfortable. So yeah, thank you very much, sir. And in fact, it is basically honor for our firm that despite of your busy schedule, you could actually spare time for the Saturday webinars of the students. I request all the student speakers now to please take the class forward. Thank you, Vishalji. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks, everybody. First of all, a very good afternoon to everyone. So today's topic is all about company audit. We'll cover it in 2 phases. First one is all about audit trail guidance note, which has been issued by the institute. And in the second phase, we'll cover the recent issues and challenges in company audit, which are relevant for the financial year 2022 and 2022, 2023, and 2023 and 2024. So the institute has issued a guidance note regarding the implementation of Rule 11G, which has been newly inserted. So before talking about the rule, we shall learn where
where we are required to report on that matter. So section 143 of Companies Act states that the auditor has to report on various matters, and under that 143.3 clause J states that auditor shall report on other matters too, and that other matters are as prescribed under Rule 11 of Companies Act. Under Rule 11, Ministry of Corporate Affairs has issued a notification on 24th of April 2021, in which they have omitted Rule D and they have newly inserted Rule E, F, and G. And in today's Saturday class, we'll be exclusively talking about the Rule G, which they have inserted. Actually, this rule has been inserted on 2021, but this has been deferred subsequently for 2022, and then now it is going to be applicable from 2023. So what rule says? So the rule says whether the company, in respect of a financial year commencing on or after 1st April 2022, has used such accounting software for maintaining its books of accounts, which has a feature of recording audit trail. So audit trail, added log facility, and the same has been operated throughout the year for all the transactions which are recorded in the software, and that audit trail feature has not been tampered with, and the audit trail feature has been preserved by the company as per the statutory record for record and retention. So here you can see, as I said, this is going to be implemented from 2023, but for auditors' perspective, it is going to be applicable from 1st April 2022. So this rule says that the company which has been maintaining its books of accounts in an accounting software should have the feature of audit trail or added log facility, जो कि पूरे साल फॉलो होना चाहिए. It should be not like कि एक दिन फॉलो नहीं हुआ है तो भी आपकी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन आएगा. So I would like to stress on the word throughout the year, and it should not be tampered. Tampered in the sense it should not be like कि हम उसको कभी भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं, कभी भी चाहे तो ऑफ कर सकते हैं. उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. Of the Companies Act, which I'll be talking about it later on. So along with this, they have also amended the section and inserted Rule 3.1 of Companies Accounts Rule 2014, which says, provided that for the financial year commencing on or after the 1st day of April 2023, every company which uses accounting software for maintaining its books of accounts shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, which must be creating an added log of each changes which are made in the books of accounts, along with the date when such changes are made, and ensuring that the audit trail cannot be disabled. So the rule is basically ensuring that it is the management's responsibility that they should maintain their books of accounts through an accounting software, and whatever changes they are making, it should be recorded through that edit log, and that edit log should not be disabled. So let us now first understand few terms which have been used in the previous rules. So books of accounts, it has been defined by section 213 of the Act, which includes records which are maintained in respect of all the sums of money which are received and expended by a company, and other matter in relation to which the receipts and expenditures take place. Second, it includes all the sale and purchase of goods and services by the company. Third, it includes the assets and liabilities of the company. And fourth is the items of any cost which are prescribed as per section 148 in case of companies which belongs to any class of companies which are specified under that section. So the second definition is about the accounting software. Accounting software basically a computer program or system that helps us to record, maintain, and report the books of accounts and relevant ecosystem applicable to the business requirements. Any software that maintains records and transactions which fall under this definition of books of accounts as per Rule 213, which I talked about it earlier, and will be considered as an accounting software for the purpose of Rule 11G. So for an example, accounting software कैसे होगा? अगर मान लीजिए अगर आपका कोई सेट, it should not be like एक सॉफ्टवेयर है टैली जिसमें आप सिर्फ अपनी एंट्रीज कर रहे हैं, वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा.
अगर कोई अपने सेपरेट सॉफ्टवेयर में आप अपने सेल्स के बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं या परचेज के बिल अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड दैट on that also account that will also be considered as an accounting software. So the hero topic, audit trail, around which the entire section revolves. So audit trail. So this is a definition which is in the guidance note, but in easy word, audit trail is basically जब आप कोई entry कर रहे हो, फिर आपने उस entry को alter कर दिया है, तो जो alteration के बाद जो रिकॉर्ड है कि आपने ऑल्टर किया है, तो वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रहना चाहिए कि उस किस पर्सन ने उसको ऑल्टर किया है, किस टाइम पे ऑल्टर किया है, because there are circumstances when entities passes an entry, they changes an entry. So edit log feature will help auditors and governments कि हम उनसे जाके पूछे कि आपने ये एंट्री अच्छा पहले ये की थी, देन आपने इसको चेंज करके पहले पहुंचा दिया, सो कहेंगे अब ठीक है हमारा टैक्स निकालो. So audit trail, basically the definition says edit log. Edit log, just like the history of all the entries and how they have been altered and modified, is a visible trail of evidence enabling one to trace information which are contained in the statements or reports back to the original input sources. Audit trails are basically the chronological records of any changes which you will made to that data. Any changes which may be like creating new data, updating or deleting the data will be recorded. This is just like going through the footprints of the management, what entries they are passing, what they have changed in that. So what is going to be the effect on accounting system with that? Once the feature is enabled, then all the backdate entries will be now recorded, or any alteration which will be made in the books of account will be noticed by the auditor and will come to our eye. For example, if you have passed any entry in the month of October regarding month of May, मई का कोई बिल आपसे छूट गया था, तो आपने उसकी एंट्री अक्टूबर में करी है, तो वो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप जब भी अक्टूबर में एंट्री पास कर लेंगे तो उसका एक एडिट लॉग जनरेट हो जाएगा और कोई भी उसको देख सकता है कि हाँ ये एंट्री बेसिकली तो अक्टूबर में पास करी है जबकि ये मई की है. बिकॉज टैली में पहले ऐसा फीचर नहीं था, जब भी एंट्री पास करते थे आपको उसी दिन दिखती थी कि हाँ ये 21 की ही है या इस मई के ही रिलेटेड है, बट नाउ विद दिस फीचर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये एंट्री बाद में पास की गई. So this ensures and enables and enhance more transferability and accountability for all of us. So talking about it, applicability for companies, it is going to be applicable from 1st of April 2023, and for auditors, like for reporting purposes, it will be commencing on or after 1st of April 2022. So what it means is like auditors के लिए तो ये section defer नहीं हुआ था, but companies के लिए section एक साल और defer कर दिया कि now they should have the feature of audit trail की जो books of accounts हमें maintain करनी है, with that feature वो 1 अप्रैल से लागू कर दिया, but auditors को जो reporting करनी है वो 1 अप्रैल 22 से ही करनी है. So अगर आपने accounting software basically जब आप computerized और electronic forms में अपने books of accounts maintain कर रहे हो, but अगर आप manually अपने books of accounts maintain कर रहे हो तो आप इस सेक्शन के परव्यू के बाहर हैं. बट दिस डजंट मीन कि ऑडिटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आउट हो जाएंगे. ऑडिटर्स को फिर भी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करना पड़ेगा कि इन पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज दे आर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली. सो दिस रूल not only is applicable to the standalone financial statements, this is going to be applicable on the consolidated financial statements too. So अगर मान लीजिए आपकी ब्रांचेस है 30-40 हैं जिनके आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे 600 that says using the work of another auditor आप उसके भी आप पे भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. So the next slide is about the businesses which are going to be falling under the purview of this audit trail edit logs कि किस किस को इस रूल को अप्लाई करना है और किस किस को नहीं करना है. तो पहले हम ये जानते हैं किस किस को नहीं करना है. तो जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे रूल अप्लाई नहीं होगा, जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स हैं उन पे भी नहीं एप्लीकेबल होगा, एंड देन जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड जो एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी उन पे भी एलएलपी वाली जो फर्म्स हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा. सो अब किस किस पे अप्लाई होगा? जिन जिन पे कंपनीज एक अप्लाई होता है उन सारी एंटिटीज पे अप्लाई होगा. सारी पब्लिक कंपनी, सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज
OPCs, government companies, Section 8 companies, Nidhi, and foreign companies. Foreign company in the sense जो companies Act 2013 में registered हुई हैं. So here is a question for all of you, which is just related to the slide I discussed earlier. So you can write the answer in the message box. The question says the auditors of which companies are required to report on the compliance with audit trail requirements. Option A is Section 8 companies. Option B is foreign companies. Option C is companies incorporated outside India. Or D, the companies incorporated in India. E, all of the above. So everybody is requested to please put the reply into messages. So is it option E? No, sir. It's not E. So people are replying option like E. Sorry, आपका जवाब गलत है. So, Ruchika and I think someone named as May 2, Raghavi, hers, they have replied option F. सही जवाब पे आप जीते. That is right. F option is right because I said जो companies act में registered हुई हैं, जो इस act में जो incorporate हुई है, because the companies outside incorporate हुई हैं, वो इस act के purview में ही fall नहीं करती हैं. So the option F is correct. So the next topic is about the preservation, because preservation is also an important aspect for this rule. The rule gives the reference of section 128(5), which requires the books of accounts to be preserved by the companies for a minimum period of 8 years. So जो audit trail है, जो edit logs हैं आपके books of accounts के, वो भी 8 सालों के लिए आपको preserve करने हैं, which will be applicable from 1st of April 2023. And this act is prospectively applied. आपको इससे पहले के जो आपके edit logs थे या जो audit trail का फीचर था, उन पे वो apply नहीं होगा. So our auditor's responsibility is basically to report on that. So management is having the primary responsibility to look upon that and to ensure that the books of accounts are properly maintained with that audit trail feature. They shall use that accounting system which has that feature of audit trail for each and every transaction. And they should also ensure that the edit log of each changes. I would like to stress upon that each change should be in that audit trail edit log feature, and along with the date and along with the person who has altered it, and that should not be able to be tampered. That no one cannot disable. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बंद कर दिया and then entry pass कर दी and then आपने फिर on कर दिया. ऐसा किसी के पास भी right नहीं होना चाहिए. So अब ये आता है कि आप इसको कहाँ पे store करके रखेंगे. तो आप जो accounting software है वो जरूर कहीं पे भी हो सकता है. It might be within your premises, within India, outside India, or on cloud. आपके पास सारी available है options. So that is basically the management's responsibility because they are having the primary responsibility. So now talking about the auditor's responsibility, auditor having the responsibility to provide that assertion in the audit report. They have to comment whether the company is using an accounting software which has the feature of recording audit trail of each and every transaction. Auditor would be expected to verify the following things. So the first thing which they have to verify, क्या जो audit trail feature है वो configurable है. That is कि कोई भी उसे disable कर सकता है, कोई भी उसे enable कर सकता है. तो ये हमारा जो reporting का purpose है उसको कहीं से मतलब like valid नहीं कर रहा है. तो दूसरा है कि क्या feature throughout the year लग रहा है कि नहीं लग रहा है. Because the rule says कि पूरे साल applicable होना चाहिए. जो सारे transactions हैं वो सारे ट्रांजेक्शन इस फीचर से कवर होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका कोई ट्रांजेक्शन रह गया है या अलग सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो रहा है तो आप उस पे ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं लगा रहे हैं. ये सारे ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होना चाहिए और ये प्रिजर्व होना चाहिए. This is Saloni, this is very important aspect that all transactions recorded in the software are covered, and you rightly mentioned that suppose if company is maintaining say tally
as well as there are other software. Say for invoicing, there are some other softwares, or for inventory, there is some other software. So having audit trail only in the tally and not in the software related to the inventory, or not in the software related to invoicing, would not suffice the requirement of this particular rule. So whenever you are going for an audit, you must see that what are the all softwares which are being actually used by the company, and then every software must be tested. Because many times I found with when I had interaction with some of the clients, that they are maintaining their invoicing into Excel. So if some client is maintaining their invoicing into Excel, which is very much editable, but no log is being recorded over there, then they are not complying with the requirement of this audit trail. So this is very, very important, that we must have a comprehensive study of all the softwares which are there, and for every software there must be a testing that whether audit trail is maintained or not. Continue. Yes, sir. Because let me finish first, then we'll discuss on that. That the audit trail should be preserved as per section 128. 8 साल के लिए वो preserve हो रहा है कि नहीं है, companies ये requirement fulfill कर रहे हैं या नहीं है. और the last one, the audit trail should not be tempered. Basically जो rule हमने starting में पढ़ा, ये कुछ 4-5 चीजों को बताता है, but ये 4-5 चीजें भी इतनी important है, जैसे कि कोई भी उसको बंद या चालू नहीं कर सकता है. दूसरा, सारे ट्रांजेक्शंस पे होना चाहिए. तीसरा, थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए. थर्ड, इनका रिटेंशन सही होना चाहिए और ये टैम्पर्ड नहीं होने चाहिए. सो अगर कोई एक्सेल में मेंटेन कर रहा है तो मिनिस्ट्री का कोई कंसर्न नहीं है. आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हो या कोई और एक्सेस में कर रहे हो, कहीं पे भी मेंटेन कर रहे हो, अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हो तो उसका एडिट लॉग होना चाहिए. और अगर नहीं है तो आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी. और इससे बेटर है कि आप खुद अपना जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो चेंज कर लीजिए. सो दिस इज बेसिकली और उसको चेंज करा गया है. जैसा आप देख सकते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे. फर्स्ट वन इज बेसिकली जब मैंने एंट्री क्रिएट करी, फिर किसी सेकंड पर्सन ने उसको ऑल्टर किया तो उसका नेम और टाइमिंग है. थर्ड वन इज वापस किसी ने ऑल्टर किया, रीसेव किया, तो वो सारे लॉग्स ऐसे मेंटेन होने चाहिए. तो ये हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट प्लेसेस पे कि जो कभी कभी जैसे मैंने देखा था कि ना कैश बैलेंस नेगेटिव था किसी का, तो अभी तक तो ये फीचर इनेबल नहीं है. 500 रुपए का नेगेटिव कैश बैलेंस था, तो उन्होंने फिर एक एंट्री कर दी, एम्प्लॉय से पैसा ले लिया डेबिट एंड देन उसको पे कर दिया क्रेडिट. तो देन उससे क्या हो गया, उनका कैश बैलेंस पॉजिटिव हो गया. बट अगर एडिट लॉग फैसिलिटी अवेलेबल होती तो मैं देख सकती थी कि उन्होंने किस तारीख को उसको एंट्री करी, बिकॉज उन्होंने लेटर ऑन एंट्री करी थी जब उनको रियलाइज हुआ कि कैश बैलेंस नेगेटिव चला गया. तो इस फीचर से बहुत हेल्प मिलेगी हम लोगों को आगे की ऑडिटिंग में. सो बेसिकली नॉट टॉकिंग अबाउट द अप्रोच. जब मैंने गाइडेंस नोट पढ़ा तो मैंने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया. ऐसा गाइडेंस नोट में नहीं है, बट जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया. In fact, it is technical guide, not guidance note. Okay, sir. Sorry, that is technical guide. So the first stage is about identification. Then it was review stage, and then reporting stage, and again reporting stage under section 143(3). So the identification stage. So these points are very self-explanatory. So the identification stage is all about auditor to ensure that the primary responsibilities in the hands of management. So we have to identify the record and transaction which forms the part of books of accounts of that entity. The next one, we have to identify about the accounting software which they are using. And then we have to see that the audit feature is enabled or not. So if audit trail is feature enabled, then we have to see क्या वो work कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कोई भी हम जब changes कर रहे हैं तो वो record कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Then the audit trail should be enabled at the database level. मतलब entities के बिल्कुल last stage से ही applicable होना चाहिए. Then it should be properly protected from any modification. Audit trail में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ऐसा एंटिटी में है कि नहीं है फीचर, एंड उसको रिटेन करके रखना है एज पर द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स.
Now the last one is that जो भी controls हैं audit trail feature के वो properly effectively throughout the period of reporting operate हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. So next one is about auditor should see कि management ने internal controls सही से लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं. तो ये कुछ illustrators हैं जिससे हम determine कर सकते हैं कि उनका internal control feature सही से work कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So the first one is that कि फीचर जो है वो कोई भी डिसेबल और डीएक्टिवेट नहीं कर सकता है, ऐसा कंट्रोल है. दूसरा ये कंट्रोल होना चाहिए कि जो यूजर आईडी है वो प्रॉपर्ली असाइंड है, सबका जो सेग्रीगेशन होना चाहिए कि कौन अगर जो परचेज की एंट्री करे तो उसको सिर्फ परचेज का ही राइट होना चाहिए, जो सेल्स की एंट्री करे उसको सेल्स का ही राइट होना चाहिए. और जो लॉग्स है कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए वो ये देख सके कि जो लॉग्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी एंट्रीज में एम्प्लॉय चेंजेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं. और उसके बाद एक और कंट्रोल होना चाहिए जैसे कि जो एक्सेस है ऑडिट ट्रेल की वो और जो उसका बैकअप है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए. जो पीरियोडिक बैकअप्स है वो एज पर सेक्शन 128 होने चाहिए एंड ऑडिट ट्रेल्स को प्रॉपर्ली रिटेन करके रखना है. The next is about the relevant transactions की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. तो हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन जिन पे ऑडिट ट्रेल का फीचर आएगा. सो हम टेस्ट बेसिस पे देख सकते हैं एक एंट्री पास करके अगर मैं कोई एंट्री में चेंज कर रहा हूँ तो वो एंट्री में जो चेंज है उसको कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसके बाद हमको देखना चाहिए कि मैनेजमेंट की क्या अप्रोच है, जो उसका काउंटिंग सॉफ्टवेयर वो कैसे कैसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है. जैसे कि एक अपेंडिक्स इंक्लूडेड था तो वो मैं अपेंडिक्स शेयर कर रही हूँ. लाइकवाइज जैसे कि कंपनी का काउंटिंग सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डिफरेंट यूज कर रखे हैं, जैसे कि सेल्स के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर है, कहाँ उसकी लोकेशन है, डेटाबेस उसका क्या है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है, क्या उसमें ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है. सो हम इसको रेफर कर सकते हैं. अगेन बैक टू द टॉपिक, हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे क्या जो चेंजेस हो रहे हैं उनको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. These are might be like this is basically related to IT. तो हो सकता है हम लोग कभी प्रॉब्लम्स है तो हम स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं. उसके साथ ही साथ हम सर्विस प्रोवाइडर्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स को भी हम स्पेसिफिकली रेफर कर सकते हैं इस ऑडिट ट्रेल फीचर में. सो द नेक्स्ट स्टेज, हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि मैनेजमेंट क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उसमें ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है. नाउ रिव्यू स्टेज पे ये आता है क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो ऑडिट ट्रेल है वो इम्प्लीमेंट हुआ है और पूरे साल इम्प्लीमेंट हुआ है. बिकॉज अगर एक दिन भी अगर मान लीजिए आपका ऑडिट ट्रेल फीचर इनेबल नहीं है तो योर रिपोर्ट विल बी क्वालिफाइड. दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है ऑडिट ट्रेल की वो सिर्फ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके पास उसकी एक्सेस है ऑडिट ट्रेल देखने की. तीसरा वो पूरे साल भर में होना चाहिए. उसके बाद फोर्थ वन इज कोई भी चेंजेस जो होने चाहिए वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं और एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए मैनेजमेंट का कि जो भी चेंजेस एम्प्लॉय कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली रिव्यू करते रहे टाइम टू टाइम. So we have to ensure the completeness. जो भी एडिट लॉग फीचर्स है, जो भी रिपोर्ट बन के आ रही है वो कंप्लीट है कि नहीं है. तीसरा जो भी रिकॉर्डेड है वो डेटाबेस जो है वो प्रॉपर्ली यूजर आईडी भी बता रहा है, वो टाइम भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, सारी डिटेल्स बता रहा है कि किसने कब और कैसे चेंजेस करे. टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टू assess the completeness and accuracy of the audit trail. So and the last one is that we can review on sample basis because अगर डेटा ज्यादा है तो हम सैम्पल बेसिस पे देख सकते हैं कि पूरे साल है कि नहीं है, प्रॉपर्ली सही से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई भी ऑल्टरेशंस जो हुई है. So the important stage is about reporting stage. So reporting stage में आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं, 3 सिनेरियोज हो सकते हैं कि मैनेजमेंट ने, फर्स्ट वन इज लाइक कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली ऑडिट ट्रेल रख रखे हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेसिस पे. तो फर्स्ट में तो आपकी रिपोर्ट क्लीन जाएगी. सेकंड ऑप्शन है कि आपने ये देखा है कि जो मैनेजमेंट है उसने सारे रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई नहीं कर रखा है ये प्रोविजन या कोई वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है. थर्ड वन इज लाइक कि आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ही फीचर ही नहीं है ऑडिट ट्रेल का, या जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है पूरे साल अप्लाई नहीं हुआ है. तो जो सेकंड और थर्ड सिनेरियोज है उनमें आपका मॉडिफाइड या एडवर्स रिपोर्टिंग होगी एज द केस में भी.
So now talking about an important topic that के जो हमारे auditors को जो reporting करनी है वो financial year 22 and 23 में भी apply होगी, but जो management के लिए responsibility है वो 23-24 में आ रही है. So how we can the provision to Rule 3(1) of the Companies Accounts Rule 2014, it is applicable for the companies only with effect from 1st April 2023. So the reporting under this clause is not applicable. So ये properly provided है उस technical guide में. So हम इसको refer कर सकते हैं जो अब financial year है जिसकी हमको अब reporting करनी है. So these are the basic illustrative जो हम refer कर सकते हैं अगर आपका unmodified opinion है standalone financial statements में. So I would like you to please read what is that what is the unmodified reporting report should contain. अगर आपकी report clean है तो आप कैसे reporting करेंगे, तो ये basically कुछ illustrators provide कर रखे हैं standalone financial statements के. So one of you may read. I think Hers has raised some queries from you. Hers? Yes, sir. I think either he's not hearing, so you can continue till he's not able to speak. Yeah. Okay, sir. Thank you. Bhavya, please read. अगर हमारी रिपोर्ट क्लीन है, मतलब एंटिटी ने ना वो ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल कर रखा है, टैम्पर्ड भी नहीं है, तो हम कैसे अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे? Based on information which including test checks, the company has used an accounting software for maintaining its books of through the year, all the relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered. Additionally, the audit trail has been preserved by company as per the statutory requirements for record retention. समझ में anyone. The company accounting software use कर लिया, maintain करने के लिए books of accounts, उसमें audit log facility throughout the year properly work कर रही है, और कोई भी ऐसा केस नहीं मिला या इंस्टेंस नहीं मिला जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर टेम्पर हुआ. राइट, मतलब जब हमने एग्जामिनेशन किया तो हमको है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ मेंटेन कर रखी है, और वो पूरे साल उन लोगों ने इनेबल कर रखा था और कोई भी टेम्पर्ड नहीं हुआ है ऑडिट ट्रेल. So this is another illustrative in case of consolidated financial statement में हम कैसे incorporate करेंगे. And this is also अगर हमारी रिपोर्ट modified है तो हम जो instances except for the instances mentioned below जो भी हमको during the audit पता चला हम उसको incorporate कर देंगे कि इन चीजों में हमें problems मिली है. So there may be certain cases जब आपको कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में भी बता रखा है. जैसे कि अगर मान लीजिए ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल्ड था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट किसी एक सॉफ्टवेयर पे नहीं था. मान लीजिए फिक्स सेट के सॉफ्टवेयर पे ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं था, तो हम ये इलस्ट्रेटिव वर्डिंग यूज कर सकते हैं that based on our examination the company has used accounting software for maintaining its books of accounts which has the feature of audit trail facility except in respect of maintenance of fixed assets record wherein the accounting software didn't have the audit trail feature enabled throughout the year. कि सारी चीजों में सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल था, बस फिक्स असेट के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स थे उनमें फीचर इनेबल नहीं था. तो हम ऐसे वर्डिंग से हमारी रिपोर्ट में इंक्लूड
कर सकते हैं। सेकंड वन इज जब ऑडिट ट्रेल फीचर थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड नहीं हो रहा है, मतलब लाइक अगर सिंगल डे भी आपका ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल नहीं था, तो आप अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर का जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है किस किस दिन इनेबल नहीं था। द नेक्स्ट वन इज अबाउट अगर थर्ड पार्टी वेंडर के पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा है और उसकी हमको एक्सेस नहीं मिली गई है, तो हम हमारा ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सकते हैं, तो हम ये वर्डिंग्स यूज कर सकते हैं। देन अगर हम लोगों ने जो रिकॉर्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स मेंटेन नहीं कर रखे, the audit trail has not been preserved by the company as per statutory requirements for record retention, तो ये जो है ये बेसिकली सेकंड ईयर से ही हम बता पाएंगे, 2023 के बाद जो भी ईयर्स होंगे उनमें बताएंगे कि उन्होंने प्रॉपर्ली रिटेन कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं। द थर्ड वन इज अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई आपने माइग्रेशन किया है सॉफ्टवेयर का, टैली का कोई माइग्रेशन मान लीजिए सैप ने कर दिया है या कोई और चेंजेस करे हैं, तो ऑडिटर उनके बारे में रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, तो वो ये वर्डिंग्स यूज कर सकते हैं। So there might be some cases auditor may come across कि जो कुछ errors हैं या fraud है because of some deficiencies in their accounting software, तो उसको regard देना चाहिए कि जो deficiency हमें मिली है वो material है कि नहीं है और उसका क्या magnitude है। So हमको rule 11G के साथ साथ clause 10 of CARA 2020 along with section 143(12) हम कंसीडर करेंगे और अपना जजमेंट फ्रेम करेंगे कि जो भी हमें फ्रॉड या एरर जो भी डिटेक्ट हुई है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। So this section also like section 143(3)(I) also requires the auditor to state whether the company has adequate internal financial controls with reference to the financial statements in place and their operative effectiveness regarding that. So accordingly जो audit trail feature है अगर वो ऑपरेट नहीं हुआ है तो वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके इस रूल के रिगार्ड में वो रिपोर्ट कर देगा ऑडिटर, और अगर हमें कोई मटेरियल वीकनेसेस मिली हैं तो भी हम हमारा ओपिनियन है वो हम मॉडिफाई कर देंगे। So we will obtain a written representation from management regarding the responsibilities which they have to fulfill. मैनेजमेंट से हम एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी है और अपनी एंटिटी में प्रॉपर कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करे थे। तो सेकंड वन इज हम उनसे पूछेंगे क्या आप लोगों ने प्रॉपरली इवैल्यूएट करे हैं और असेस के जो भी चेंजेस थे ऑडिट ट्रेल्स में। थर्ड वन इज हम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग देयर एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज प्रोसीजर इन रिगार्डिंग टू ऑडिट ट्रेल्स रिप्रेजेंटेशन लेंगे। हम ये भी management should also state that they have disclosed to auditor all the deficiencies which they have come across, and they should also state that the instances where the identification of fraud जो उनको लगता है कि कुछ ऐसे fraudulent activities उनके entity में है तो वो भी वो represent कर सकते हैं, और वो ये भी बता सकते हैं कि कोई भी deficiency जो उन्होंने identify करी है और audit committee को उन्होंने बताया है और जो अभी तक resolve नहीं हुई है। So now audit complete हो जाती है तो then उसका proper documentation होना चाहिए जिसके लिए ऐसे 230 बोलता है। So the auditor may document the work performed on audit trail such that it provides a sufficient and appropriate audit evidences basis on which the auditor has reported under rule 11G, and the evidences कि कैसे हमने हमारी audit procedures perform करे हैं regarding that rule. So that was all about audit trail. Thank you, Saloni. You have rightly summarized the entire technical guide issued by the institute, and for all of us, it is very important that for the next year, 2023-24, whenever and wherever we are on audit, we just see whether these things are presently being maintained or not. And if it is not maintained, because at most of the cases, basically you will be for an audit for the financial year 2022-23, but at that time you should also examine and then report to the concern that whether this
provisions have been complied with the companies or not, so that appropriate message can be circulated to the respective clients that sir आपने ये अभी भी provisions इसको comply with नहीं किया है, so that if it will be continued, as she has rightly said that it should be basically throughout the year. तो जब आप ऑडिट जा रहे हो और आपको लगता है कि ये कंप्लाइंट विद नहीं हो रहा है, तो जो भी रेस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं, दे कैन एक्चुअली कम्युनिकेट टाइमली टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस कि साहब ये आपके यहाँ पे 2023-24 के अंदर ऑडिट ट्रेल की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई विद नहीं किया जा रहा है, आप इसको आगे से कंप्लाई करें, और इस साल के लिए आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल गाइड वी हैव टू मेंशन ए क्वालिफिकेशन और whatever way as per the conditions, as per the facts and circumstances of that particular client, we need to report it in our audit report as per this section 143. So very important aspect, everyone should actually see whether these are complied with the companies or not. So thank you, Saloni, for preparing this particular presentation, which is really very nice presentation which we have presented, which you have prepared. So now I request the other speakers to please take the discussion forward. Good afternoon, everyone. Now we are moving forward toward other recent issues and challenges in company audit. Firstly, we will discuss corporate social responsibility. As we all know, what is the mean by corporate social responsibility? ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से एग्जिट कर जाता है ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। इसकी इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का सेक्शन 135 है और ये बोलता है कि एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का उसका 2% हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे खर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट 5 करोड़ था, 2021-22 में हमारे को लॉस हो गया था 1 करोड़ का, पर 2020 और 23 में 8 करोड़ का हमने प्रॉफिट था, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 4 करोड़ था, तो उसका हमें 2% 8 लाख रुपीस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 हमें सीएसआर पे खर्च करना होगा। सीएसआर पे खर्च करने के लिए हमें पहले एक कमेटी बनानी होती है। इसमें 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं और जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी होता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और जिन कंपनीज में सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना होता, उनमें 2 उससे ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, और हमें ये अपनी बॉडी रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करनी होती है कमेटी। अब इसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है, इन्हें जो भी हमें सीएसआर करना होता है उससे रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज प्रोजेक्ट या हमें उस पर कितना खर्च करना है और उसको टाइमली मॉनिटर करना होता है। फिर जो ये पॉलिसीज बनाते हैं ये वो बोर्ड को कम्युनिकेट करते हैं और बोर्ड उन पे अपना अप्रूवल देता है, और ये पॉलिसीज और जो जितनी भी इनकी रिगार्डिंग सपोर्टिंग होती है वो डिस्क्लोज करता है अपनी पॉलिसीज में, और ये उसके साथ ही वेबसाइट पे भी अपलोड की जाती है। अब अपन सेक्शन 135 की बात करते हैं, तो ये हमें बताता है कि एवरी कंपनी को हर साल में 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का लास्ट 3 ईयर में जो भी था वो स्पेंड करना होता है। इफ कोई कंपनी ड्यूरिंग द ईयर ही इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे उसका प्रीसीडिंग ईयर उस फाइनेंशियल ईयर में जितना उसका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% खर्च करना होता है। और अब हम अगर बात करें तो इन्हें ये खर्च कहाँ करना होता है, तो ये इनको सबसे पहले ही अपने लोकल एरिया और सराउंडिंग्स में जितने भी एरिया कवर होते हैं उन्हीं पे इन्हें फोकस करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर इनके पास ड्यूरिंग द ईयर एंड अगर कोई पैसा बच जाता है तो उन्हें विद इन 6 मंथ के अंदर ये शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और यहाँ पे ये अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं उन्हीं का अमाउंट होता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर तक चलते हैं, और अदर देन जो होते हैं जो ड्यूरिंग द 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। ऑल्सो दैट इफ कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, ये अमेंड हुआ था 2022 में। अगर कंपनी अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा एक्सपेंड कर देती है तो वो उसको 3 साल तक सेट ऑफ कर सकती है, पर उसको सेट ऑफ करने के लिए उसे ड्यूरिंग द ईयर के पीएनएल में वो उसको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकती है। दैट मीन उसको वो कैरी फॉरवर्ड करना होगा और ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंड नहीं दिखा सकती वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो किया है, तो ये वो उसको अगले साल सेट ऑफ कर पाएगी और उसको मैक्सिमम 3 साल तक के लिए सेट ऑफ कर सकती है और उसके बाद वो किक ऑफ हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं सेक्शन 135(6) की। तो ये बेसिकली डील करता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हमारा कोई पैसा ईयर एंड पे बच जाता है तो हमें वो ट्रांसफर करना पड़ता है अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में विदिन 30 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। और अगर हम फिर भी उसको अगले 3 साल तक अगले हम 3 साल तक स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो हमें उसको फिर शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग विदिन 30 डेज में उसको 3 साल के बाद हमें उसका शेड्यूल 7 वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। फिर हम इसकी पैनल प्रोविजन की बात करें तो अगर कंपनी इसमें डिफॉल्ट करती है तो twice the amount required to be transferred by the company to the fund specified in the schedule 7 और 1 crore rupees whichever is less। और जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पे 1/10 of the amount required to be transferred by the company और 2 लाख रुपीस whichever is less की पेनल्टी लगती है। नाउ अपन बात करते हैं फिक्स असेट, इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड फिजिकल वेरिफिकेशन की। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट एज हम सभी ऑडिट्स में करते ही हैं, ये 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो हम खुद 31 मार्च या 1 अप्रैल को वहां जाके फिजिकल काउंट ले लें, या फिर हम अगर कुछ दिन बाद जाते हैं तो हम उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, अगर हम सपोज 10 अप्रैल को अगर किसी स्टॉक का फिजिकल काउंट करते हैं तो हम 1 से 10 तारीख के बीच में हमने जितने भी परचेज या सेल इनवॉइसेस थे उनको हम एडजस्ट करके 31 मार्च की बैकवर्ड कैलकुलेशन करके फिजिकल वेरिफिकेशन सेट करेंगे। और ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कारो रिपोर्टिंग में भी हमें इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है और हमें फिक्स असेट की भी सभी फिक्स असेट की टैगिंग भी करनी होती है। इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की कारो की रिपोर्टिंग में 2 पॉइंट स्पेसिफिक है कि मैनेजमेंट को हर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बीच में हमेशा डिफरेंट इंटरवल में हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है और अगर उन्हें कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो उन्हें वो रिपोर्ट में भी शो करना होता है। अब हम वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो हम अगर किसी भी चीज के ओपनिंग बैलेंसेस है तो हम उनको फिक्स असेट के रजिस्टर से लेजर से उनके बैलेंस मैच कर सकते हैं, या ड्यूरिंग पिछले साल के फाइनेंशियल के क्लोजिंग बैलेंस से हम ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई कर सकते हैं। और हमने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी नया एक्विजिशन किया है या सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया है या किसी में भी कोई इंप्रूवमेंट किया है या कोई कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस डेवलप की है तो हम उनके रिगार्डिंग उनके कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स उनके वर्क ऑर्डर या उनके कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन आई हुई है हमारे पास वर्क ऑर्डर से रिलेटेड तो वो सब हमें चेक करना होता है। और अगर हम ड्यूरिंग द ईयर कोई फिक्स असेट को रिटर्न ऑफ भी करते हैं या डेप्रिसिएशन करते हैं तो वो पहले रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी चाहिए, उसी के बाद वो सब होना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं एमएसएमई से रिलेटेड। अभी एमएसएमई पे गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रेस है। पिछले साल भी इन्होंने बैलेंस शीट में इसका अदर से की हेडिंग दिखाई थी कि हमें एमएसएमई की जो हमारे ड्यूज होते हैं उनको अलग से सेपरेटली शो करना होता है। और अभी भी अब अगर हम एमएसएमई का पेमेंट नहीं करते और उन पे इंटरेस्ट लगता है तो वो हमें इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होता है। इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर हमारी प्लांटिंग मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के जैसे क्लासिफाई होगी। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांटिंग मशीनरी 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है तो हम उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लासिफाई करेंगे। और मीडियम एंटरप्राइजेस में पिछले इस बार चेंज आया है, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है, पहले ये 20 करोड़ और 100 करोड़ था तो उसे हम मीडियम एंटरप्राइजेस क्लासिफाई करेंगे। अब इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऐसी, पहले हमें उद्योग रजिस्ट्रेशन कराना होता था जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, वो 30 जून 2022 तक था। उसके बाद इन्होंने सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है उससे एप्लीकेबल कर दिया है। हम सीधे उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाके 4 इजी स्टेप्स में इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फिल द एमएसएमई एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें हमारी बेसिक डिटेल पेन, आधार, ईमेल आईडी, फोन नंबर एक्सेट्रा जैसे हमारे को डाटा डालना होता है। फिर हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। फिर जो उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो हमें अपडेटेशन के लिए मेल कर देते हैं और अगर वो उससे सेटिस्फाई होते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं वी आर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के। अब और एमएसएमई, अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे ऑडिट में आती है कि हम एमएसएमई को पता कैसे लगेगा कौन सी पार्टी एमएसएमई है, क्योंकि जनरली वो बोल देते कि हम हमारे बिल पे लिखते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत दिक्कत का काम हो जाता है कि कौन सी पार्टी एमएसएमई है या कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जब हम बैलेंस कंफर्मेशन के लिए उनको मेल या फिजिकल लेटर भेजते तो हम उसी में नीचे एक लाइन और ऐड कर दें कि आप ये भी कंफर्म कर दें कि आप एमएसएमई पार्टी है या नहीं है। और अब एमएसएमई को हम पेमेंट जनरली 45 डेज में करना होता है। अगर हमारा एग्रीमेंट हमें 45 डेज में करना होता है, पर अगर हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है उनसे और वो अगर विदिन 45 डेज से कम है तो उसमें या फिर 45 डेज दोनों में से करना होता है। और अगर हमारे दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हमें उन्हें 15 दिन में पेमेंट करना होता है। और अगर हम इसमें अगर कोई डिफॉल्ट करते हैं तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हमारे पे इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगती है।
ये इंटरेस्ट होता है 3 times ऑफ द बैंक रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। और ये इंटरेस्ट आल्सो नॉट such interest is not an allowable expenditure under income tax act 1961। और अगर इसके हमें एनुअली 2 रिटर्न भरने होते हैं जो कि 6 मंथ में होता है, जिसकी ड्यू डेट होती है सितंबर वाले क्वार्टर की 31 अक्टूबर और मार्च वाले की 30 अप्रैल। From now Pragya will continue. So can I continue? Good afternoon, everyone. Now we will move on Ind AS amendments that has been incorporated in Ind AS. First of all, we will go on 2022, and then we will move on to 2023 amendments. What happened in 2022 in companies in Indian accounting standards was just 4 types of main Ind AS were amended. First was Ind AS 16 that talk about property, plant, and equipment. Then second was Ind AS 37 that talks about contingent liability, contingent asset, and provisions. And third was Ind AS 103 that talk about business combinations. And fourth was Ind AS 101, 41, and 109. When we move on Ind AS 16 that talks about PP, first we have to know what is the background of PP. In Ind AS 16, we basically deal about 3 types of costs, that is cost of dismantling, directly attributable cost, and purchase price. इन तीनों की मेन कॉस्ट के नेम से पता चल रहा है कि वो किस चीज से डील करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, आपको पीपी को डिसमेंटल करने के अंदर जो भी कॉस्ट लग रही है वो सारा का सारा इसके अंदर एट्रीब्यूट हो जाता है। देन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ब्रिंग करने के लिए एसेट को लोकेशन पे और उसे फिक्स करने के लिए वर्किंग कंडीशन के अंदर, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर जाएगी। और परचेज प्राइस सॉरी जो इंक्लूड करती है इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। जो मेन अमेंडमेंट आया वो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के अंदर आया। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ये कहती है एक पर्टिकुलर पीपीई को आप एक लोकेशन पे लेकर आए, उसे सेटअप कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने ये देखा कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपने कुछ सैंपल्स क्रिएट किए होंगे। उससे जो आपने सैंपल्स क्रिएट किए वो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के अंदर आता है। तो मतलब उन सैंपल्स को क्रिएट करने के लिए जो कॉस्ट लगी वो, और फिर वो सैंपल्स क्रिएट हो गए तो आप उन्हें डंप आउट तो नहीं करोगे, उन्हें सेल कर दोगे। तो उनको सेल करने के बाद उनसे जो प्रोसीड्स आई, उन दोनों का जो नेट अमाउंट होगा उसे कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के अंदर माना जाता है। तो अब इसकी जो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो पहले इंड एस नहीं बताता था। 2022 अमेंडमेंट के बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगी, which says that excess of net sale proceeds of items that were produced over the cost of testing are now deducted from direct attributable cost and they should be not recognized in P&L। मतलब उन्हें आप डायरेक्ट पीपीई का आइटम पार्ट मानोगे और उन्हें एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में से माइनस करोगे और रिकॉग्नाइज नहीं करोगे P&L पर। नेक्स्ट मूव ऑन इंड एस 37 जो कि आपको प्रोविजंस के बारे में बताता है। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर चेंज आएगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर होते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे वो आपके जितने भी आप इसमें कॉस्ट इनकर करने वाले हो, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब कि अवॉइड नहीं कर सकते उस कॉस्ट को, उससे ज्यादा होंगे। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो किस चीज का पार्ट होती है? 2 तरीके से अनअवॉइडेबल कॉस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते समय जितनी कॉस्ट लग रही है उन सब की कॉस्ट। सेकंड, कोई भी कंपनसेशन या पेनल्टी अगर आपको देनी पड़ गई उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए, अगर आपको नहीं करना वो कॉन्ट्रैक्ट तो आप छोड़कर जा रहे चाहते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो, इन दोनों में से जो भी कॉस्ट कम है उसको हम कॉस्ट अनअवॉइडेबल का नाम देते हैं। नाउ द अमेंडमेंट वाज, सबसे पहले ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फुलफिलिंग करने का जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज नॉट डिफाइंड। मतलब उन्होंने सिर्फ एक टर्म दे दिया, टर्मिनोलॉजी वाज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज, बट the basic definition was not there. So now the definition includes first incremental cost of fulfilling that contract. For example, direct labor लग रही है, उसके अंदर मटेरियल लग रहा है, तो वो सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। सेकंड,
allocation of other cost. For example, other cost जैसे depreciation लग रहा है, तो ये आपने PPE इधर लगा रखी है साइड के ऊपर, तो उसके ऊपर depreciation लग रहा है, जो दूसरी आपकी एक तरीके से administration cost है जो directly उसके अंदर नहीं आ रही है, वो सारी की सारी उसके अंदर part है. Then there was an amendment in 101. 101 was first time adoption of Ind AS. फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के अंदर क्या बोल रहा है? फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के अंदर सबसे पहले अमेंडमेंट जो आया था वो आया था क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंसेस. व्हाट इज दिस टर्म क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंसेस? क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंसेस ये बोलता है कि जैसे आपकी कोई एमएनसी है जो मल्टीपल आपके कंट्रीज के अंदर मल्टीपल ज्योग्राफिक एरियाज के अंदर वर्क कर रही है, तो उसको बहुत सारे अलग अलग फॉरेन करेंसीज आ रही होगी उसके पास, तो उसको एक डिनोमिनेशन के उसे कन्वर्ट करना होगा जो अभी आज के टर्म के अंदर यूएस डॉलर बोला जाता है. उस डिनोमिनेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एक टर्मिनोलॉजी दिया गया वो है क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंसेस. आई एम सॉरी फॉर दैट. नाउ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन permits that in a certain paragraph, that is C30, it permits that अगर कोई नई सब्सिडरी कंपनी या फिर आपकी एसोसिएट कंपनी आती है तो वो foreign operations to be on foreign operations that are in cumulative translation difference, that is under the head cumulative translation differences, उसको वो zero दिखा सकती है. मतलब transition date के दिन they can show it as a zero figure. But now the amendment clarifies what should happen to other companies. मतलब आपने बोल दिया कि जो companies D30 एक particular paragraph के अंदर आती है उनको आपने एक तरीके से exemption दे दिया, लेकिन what should happen to the other companies जो दूसरे पैराग्राफ के अंदर आती है. एक और पैराग्राफ था B60, उसके अंदर ये बोला गया कि you should the companies that are first time adopting Ind AS और वो जब दूसरी करेंसीज को कन्वर्ट कर रही हैं तो वो कन्वर्जन के दौरान एसेट्स और लायबिलिटीज इन दोनों से एग्जाम्पल हो जाएंगे. एसेट्स और लायबिलिटीज को कन्वर्ट करने से एग्जाम्पल हो जाएंगी जो उनकी होल्डिंग कंपनी जिसने वो दिखा रखा है पहले से, वो उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर से फिगर्स जो है वो वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर सकती है. बट द कैच वाज हियर कि इसके अंदर उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज प्रेफर किया बट इक्विटी वाज नॉट मेंशन्ड. सो इन 2022 अमेंडमेंट इट वाज क्लियरली बीइंग स्टेटेड दैट जो कंपनी जिनकी आप पहली बात कर रहे थे उनको इस सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज. Now there is another amendment and it is in 103. It was a basic you can say clerical amendment कि पहले जो Ind AS 103 that talks about business combination उसके अंदर बोला जाता था कि we are following the framework for financial reporting. Now that word was changed to conceptual framework for financial reporting. And why it was changed? It was changed because क्योंकि Ind AS हम क्यों लेकर आए थे ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को एक हार्मोनाइज के अंदर रख सकें. तो इसलिए ही जब 2018 के अंदर वापस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अंदर अपग्रेडेशन हुआ तो उस वर्ड को चेंज करके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दिया गया. Only this was the change. Due to this change, there was also change in Ind AS 37. उसके अंदर भी ये words जो थे वो permanently substitute कर दिए गए. In Ind AS 41, that is the Ind AS we least talk about, agriculture. Ind AS 41 के अंदर ये बताया गया है कि biological assets को आप recognize करते हो जिस समय आप उन्हें अपनी entity के अंदर लेकर आते हो. मतलब उसके अलावा कोई Ind AS ऐसा नहीं बोलता जो biological asset के बारे में डील करता हो. So this Ind AS talks about biological asset on initial recognition and it also talks on balance sheet date. आप balance sheet date के दिन उसे कैसे करोगे? Fair value less cost to sell. तो उस समय पे उसकी fair value होगी और उसको सेल करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसको माइनस कर देंगे. Now in that Ind AS another para says कि fair value जो term है उसका मतलब क्या है और उसके अंदर से क्या चीजें आप exclude करोगे. So it says fair value सारी कॉस्ट इंक्लूड करेगी लेकिन ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं करेगी. क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग दैट एसेट, मतलब कि आप उस एसेट को लेकर आए, आप कोई लोन लेकर आए और फिर उसके ऊपर उस एसेट को खरीदा तो फाइनेंस करने के लिए जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा. सेकंड, कैश फ्लो फॉर टैक्सेशन, मतलब कि आप एसेट लेकर आए. नाउ बायोलॉजिकल एसेट के अंदर क्या होता है कि वो एसेट अपने को इस तरीके से नहीं मिलती जैसे ये मान लीजिए आप मशीनरी लेकर आ रहे हैं तो उसके वेंडर्स होते हैं
इसके अंदर बायोलॉजिकल एसेट के अंदर आप कैटल्स लेने जा रहे हो, बायोलॉजिकल एसेट के अंदर कैटल्स और ये सब लेने जा रहे हो, तो उनका एक प्रॉपर एक प्लेस होता है. दिस इज आल्सो टर्म्ड एज मंडी और समथिंग. जो आप अपने पढ़ते हो कहीं स्टेट ऑडिट में कहीं पर जाते हो तो मंडी टैक्स कहीं आपको एक टर्म दिखता है. तो सेकंड में ये बोला गया कैश फ्लो फॉर टैक्सेशन, मतलब कि मंडी टैक्स या कुछ और टैक्सेशन जो आप उसके ऊपर दे रहे हो उसको लेकर आने के लिए, वो भी इंक्लूड नहीं होता. थर्ड पॉइंट ये दिया गया, थर्ड पॉइंट ये दिया कैश फ्लो फॉर रीएस्टैब्लिशिंग बायोलॉजिकल एसेट आफ्टर हार्वेस्ट. मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जब गवर्नमेंट ने बोला है, the government has termed that after harvesting the resources you have to replenish that land. तो इसके अंदर ही बोला गया कि आप वापस रीएस्टैब्लिश करो उस बायोलॉजिकल एसेट को, तो उसकी जो कॉस्ट लग रही है, उसका जो कैश फ्लो हो रहा है, वो भी आप इंक्लूड नहीं करते फेयर वैल्यू पर. तो ये तीन चीजें जो है हम फेयर वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं करते थे. अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है, 2022 अमेंडमेंट ये बोला कि इससे पहले तक आप डिस्काउंट रेट जो यूज करते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए फेयर वैल्यू वो रिमूव कर दी थी आप. लेकिन आप जो कैश फ्लो जो मैंने आपको बताया था, कैश फ्लो फॉर टैक्सेशन, ये आपने रिमूव नहीं किया था, इसको आपको काउंट कर रहे थे आप इस चीज को. तो दिस वाज नॉट इन कंफर्मिटी, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो था वो कंफर्मिटी के अंदर नहीं था. तो इस कंफर्मिटी के अंदर इंश्योर करने के लिए उन्होंने कैश फ्लो फॉर टैक्सेशन भी एक्सक्लूड कर दिया उसके अंदर. Now we are on Ind AS 109. Ind AS 109 talks about financial instruments. Financial liability Ind AS 109 के हिसाब से क्या होता है, financial liability is derecognized when it is extinguished. मतलब कि जब खत्म हो जाएगी तो उसे derecognize कर दिया जाएगा. But in two cases, original financial liability will be replaced with new financial liability in revised terms. मतलब कि financial liability का एक तरीके से ये मान लीजिए अमाउंट सेम हो, वो जिस चीज के लिए वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो टर्म सेम है, लेकिन उसका अमाउंट चेंज हो गया, या तो ये, या फिर जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट चेंज हो गया लेकिन पार्टी हुई है. मॉडिफाइड टर्म्स यू कैन सी. सो व्हाट आर द टू कंडीशंस? फर्स्ट, एक्सचेंज बिटवीन द एक्जिस्टिंग बोरोअर एंड लेंडर ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट इज डन विद सब्सटेंशियली डिफरेंट टर्म्स. मतलब कि जिस टर्म्स के अंदर आपको बोला था, जो एक एग्रीमेंट बना था कि इस टर्म्स के अंदर आपको पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, वो चेंज हो गया. सेकंड, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन इन टर्म्स. क्या कि जैसे एग्जिस्टिंग डेट इंस्ट्रूमेंट ये बोलता था कि मैं इक्विटी ले रहा हूं आपसे या मैं डेट ले रहा हूं, तो मैं इस चीज के अंदर आप इस चीज का आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूं. लेकिन अब वो डेट की जगह उन्होंने बोल दिया कि मैं अब क्या करूंगा, मैं आपको कन्वर्टेबल इक्विटीज, इसको एक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बना दो, मैं डेट को चेंज कर रहा हूं. तो मतलब इंस्ट्रूमेंट ही चेंज हो गया. तो इन दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी इज मॉडिफाइड. मॉडिफाइड टर्म्स के साथ है, वो पर्सन वही है, लेंडर इज सेम, बोरोवर इज सेम, द इंस्ट्रूमेंट इज चेंज, और जो एग्रीमेंट था वो चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो चुका है. Also it says that in Ind AS 109 if the NPV of cash flows under the new terms, that is modified terms, if it exceeds 10% from the present value, that when you calculate, मतलब कि अगर आप उस जो NPV जो अब नया है उसको आप कैलकुलेट करेंगे पुराने डिस्काउंट रेट से, तो 10% से ज्यादा वेरिएशन कर रहा है. मतलब आपने कोई लायबिलिटी करी थी, आप एग्रीमेंट के अंदर आ गए थे, आपने जब उसका रीपेमेंट करने लगे तो अब जिस तरीके से आपने रीपेमेंट किया उसके लास्ट के अंदर आपने एनपीवी को निकाला उसको डिस्काउंटेड रेट से, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट से, तो 10% से ज्यादा वेरिएशन कर रहा है. तो इसको भी क्या माना जाएगा कि आपने एग्रीमेंट के अंदर चेंज किया, आपने ज्यादा पैसा दे दिया उसे या कम पैसे दे दिए, 10% से ज्यादा वेरिएशन आया, तो उसको क्या माना जाएगा कि आपने बीच में एग्रीमेंट चेंज किया था. So ये समझ में आया आप लोगों को ये क्या कह रहा है? There is substantial change in the terms and conditions of the financial instruments, financial liabilities. तो वे कह रहे हैं कि अगर substantial change है ना, इसका मतलब जो पहले वाली liability है वो खत्म हो गई, that is been extinguished, उसको आप खत्म करिए, अब ये नई liability आ गई है. तो उस और जो भी डिफरेंस है ना, जनरली जैसे रिस्ट्रक्चरिंग होती है बैंक्स के अंदर, इन्होंने थोड़ा इसको थ्योरेटिकल एग्जांपल बताया. अब मान लीजिए कि कोई अकाउंट एनपीए हो गया है ना, आप लोगों में से शायद कोई बैंक ऑडिट पे गया है क्या पिछले साल, या कोई भी नहीं गया होगा मेरे ख्याल से. ये पूरा अभी नया वाला बैच ही है क्या? अच्छा. तो एनीवेज, तो जैसे कोई वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, सपोज वन टाइम सेटलमेंट समझ रहे, जब आपका एनपीए हो गया तो किसी ने कहा कि सब, बैंक ने कहा कि अच्छा ठीक है पैसा नहीं आ रहा ना, वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए, आप हमें एक बुलेट रिपेमेंट करिए आफ्टर से 1 ईयर, या
कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो गई या बलूनिंग हो गई, है ना, आप हमें जो पेमेंट करना है वो ऐसा करिए, आप अभी मत करिए, आप हमें इंस्टेड ऑफ 3 years मेक इट इन 7 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट या विद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अभी आपकी लाइबिलिटी थी जिसकी प्रेजेंट वैल्यू सपोज एक एक्स अमाउंट था, और जो आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग अमाउंट आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू y अमाउंट हो गया विच इज लोअर देन दी x। तो जो x माइनस y का डिफरेंस है दैट इज ए गेन। तो वो कह रहे हैं कि x की लाइबिलिटी को तो आप खत्म करिए और y की नई लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करिए, और जो भी डिफरेंस है दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज गेन। ये इंड AS 109 के प्रोविजंस हैं जो ये अभी एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें अब क्या चेंज आया है सर? इसके अंदर जो हमने लास्ट में देखा कि 10% से ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी नया मॉडिफाइड वर्जन माना जाता है कि आपने एग्रीमेंट के अंदर चेंज कर दिया था। तो 10% से ज्यादा के अंदर पहले इंडेस जो कहता था उसके अंदर एक टर्म था फीस, कि इट इंक्लूड्स आल्सो द फीस गिवन बाय बोरोवर और रिसीव्ड बाय लेंडर, मतलब दोनों केस के अंदर। नाउ दैट फीस टर्म इज बीइंग ब्रॉडली, मतलब और ज्यादा उसे डिटेल में बता दें कि फीस इंक्लूड्स the amount paid by the borrower and the amount paid by borrower on behalf of lender, वो दोनों amount include करेगा। Okay. So there was a minor change, but this change also just broadly classified. Yeah, but it is important to note that where that change is, है ना। अगर ये सिंपल लाइन सब्स्टिट्यूट वाली बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली इज राइटली पॉइंटेड आउट द एंटायर बैकग्राउंड। जब भी कोई अमेंडमेंट आता है तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपन उसके बैकग्राउंड को पढ़े, नहीं तो आप अमेंडमेंट कभी भी नहीं समझ पाओगे। वी शुड ट्राई दैट व्हाट आर द बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट आर द ओरिजिनल प्रोविजंस एंड इन व्हाट सिनेरियो द न्यू प्रोविजंस हैव कम। तो ये कहीं ना कहीं पहले शायद ये वाली फीस इंक्लूड नहीं रह रही होगी, तो दे हैव नाउ इंक्लूडेड। Now we are moving on the second phase, that is the newly incorporated companies Indian accounting standards amendments in 2023. We will start with the amendment in Ind AS 101 that we talked about कि इसके अंदर जो आप बोलते हैं कि न्यू टाइम फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के अंदर क्या चीजें है। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के अंदर डेफर टैक्स के अंदर जरूर चेंज आया था। डेफर टैक्स रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, it said मतलब इनके अंदर टोटली 5 पैराग्राफ्स के अंदर चेंज आया था। दैट ओनली समराइजेस ओनली वन थिंग, दैट ROU, that is right to use of right of use of assets and lease liabilities और decommissioning, restoration और similar liabilities जो है इनकी, जब इनके ऊपर जब DT और DTL आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ग्रॉस बेसिस पे करेंगे। अगर किसी कंपनी ने पहले नेट बेसिस फॉलो कर दी थी या फिर कोई कंपनी अगर पहले इनके अंदर कैलकुलेट नहीं कर दी थी, उन्हें अब ग्रॉस बेसिस पे कैलकुलेट करना कंपलसरी है। The point though I want to share one point that I discussed with Devesh sir. We used to do this in ONGC also. Okay. तो इसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस करी थी। उन्होंने बोला Don't discuss client name. हाँ सर, at a particular client place we used to do it, which stated that जहाँ पर भी आप फॉलो करेंगे वो हमेशा ग्रॉस बेसिस पे ही फॉलो होता है, क्योंकि लीज लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, एसेट्स ऑन द एसेट साइड, उन दोनों को अलग-अलग डीटीए शो करेंगे। तो नेट बेसिस पे कैसे कोई कंपनी फॉलो कर रही होगी। तो इस अमेंडमेंट का मतलब हमें कुछ ज्यादा मोटिव लगा नहीं कि इसके अंदर पर्टिकुलरली। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसका जो पहले भी डिफरेंस जाके और एक जगह क्लब हो जाता होगा, इधर डीटी और डीटीएल, तो आप जो ओवरऑल पहले ग्रॉस आ रहा था, ग्रॉस आ रहा था, अब वहां ग्रॉस नहीं आके ये वाला पर्टिकुलर जो अमाउंट है रिलेटेड टू आरओयू एंड ये दैट विल कम एज नेट। सो दैट इज द डिफरेंस। तो जो ओवरऑल जो टेबल बन रही थी, नेट डिफरेंस so far as net DTA DTL calculation is concerned, कंपनी एज ए होल कोई डिफरेंस नहीं है ना, अमाउंट होगा वही आएगा। लेकिन जब आप वो टेबल दे रहे हो जहाँ पे आप पहले डीटीएल कैलकुलेट कर रहे हो, लेस डीटीए बना रहे हो, देन जो भी नेट आ रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हो, तो अभी क्या होगा कि जो डीटीएल ग्रॉस आ रहा है और जो डीटीए ग्रॉस आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि डीटी अल्टीमेट अमाउंट बिकॉज ऑफ दिस आरओयू एंड लीज लायबिलिटी इज से डीटीए, तो वो केवल नेट ही रिकॉर्ड होगा। दैट इज व्हाट आई फील, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड।
There were few clerical amendments that we will just swipe it in 2 seconds. In Ind AS 102, there was just a footer note change for paragraph 23 to 24. It changed from one paragraph. In Ind AS 103, that is business combination, we talked in 2022 amendment 2. There is a word change. The transferor obtains control of transferee. It was stated before that. Now it was transferee obtains control of transferor. मतलब पहले वो गलती थी सच्ची में क्लरिकल, क्योंकि ट्रांसफर आप जब कर रहे हो तो ट्रांसफर ही ऑब्टेन करता है आपके ऊपर एक्विजिशन के अंदर, बट इट वाज स्टेटेड ट्रांसफर ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर. So it was a drafting mistake which has been corrected now. Now in Ind AS 109 financial के अंदर they have replaced what paragraph that described in B1 to B4. Now they have changed it to direct appendix 6, appendix C. In appendix C उन्होंने पूरा का पूरा B1 to B4 पूरा मेंशन कर रखा है, तो उसको पूरा उधर प्लग कर दिया उन्होंने. Now on Ind AS 12 that we talked in Ind AS 101 also कि आपको DTA जो निकालना है वो Ind AS 12 के अंदर भी बताया गया, क्योंकि DTA that is income tax वाला वो 12 के अंदर भी आएगा, तो the content is same. I want to refer back to that slide only. Ind AS 8 and Ind AS 1 are two Ind ASes जिनके अंदर significant change आया था 2023 के अंदर. Ind AS 8 is summarized in the following matter. The new definition जो है accounting estimates की वो बताई गई Ind AS 8 के अंदर. Accounting estimates are monetary amounts in financial statements that are subject to monetary uncertainty. Uncertainty word is also mentioned here now significantly. तो earlier professional skepticism follow करके ऑडिटर हमेशा ये बोलता था कि वो अनसर्टेन होगा, कुछ अमाउंट जो है वो छोड़ देता था, लेकिन अब उन्होंने अलग से अनसर्टेनिटी, मॉनेटरी अनसर्टेनिटी उसके अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर डाल दिया. क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स उन्होंने कर दी है. उन्होंने क्या बोला गया है कि डेवलपिंग एन अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूड्स बोथ. पहला आप मेजरमेंट टेक्निक जो है वो सेलेक्ट करोगे, दूसरा आप इनपुट चूज करोगे जो कि यूज करोगे अप्लाई करने के अंदर मेजरमेंट टेक्निक्स. मतलब मेजरमेंट टेक्निक्स को जो आप मेजरमेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए जो इनपुट्स डालोगे वो भी उन्होंने बता दी, और मेजरमेंट टेक्निक्स जो होगी वो सेलेक्ट करनी वो भी इसके अंदर बता दी. The amended standard explicitly provides some examples of the estimates to be developed by management. Following examples are: first, loss allowance for expected credit loss, that is given in Ind AS 109. Then there is a net realizable value of an item of inventory in Ind AS 2. 3. Fair value of an asset or liability that is applying under Ind AS 113. And fourth example is depreciation expense of an item of property, plant and equipment in Ind AS 16. Now going to the final and most important one in Ind AS 1. The amendment in Ind AS 1 says an entity shall disclose material accounting policy information. Now here is a question, we can say a quick question. How can you say in a entity an accounting policy information is a material or an immaterial? I will just coin a sentence and just prove me wrong if you can. Statement is material. A financial in a financial statement, a particular statement is material, but it can be immaterial in purview of my eyes, and it can be material in purview of your eyes. So how can you say that? Because in second paragraph in Ind AS 1, they have mentioned explicitly that immaterial transactions, other events or conditions that are considered immaterial should not be disclosed. They directly mentioned it that immaterial statements should not be disclosed. So the thing that is material in my aspect can be material in your aspect. So how can you just justify this amendment of it? आपका सेशन अगर हाई लेवल पे आता है तो आपके लिए वो कम लगेगा, लेकिन मेरे अगर मैं लो लेवल पे सेट करूंगा तो मेरे लिए मटेरियल लगेगा. You are talking about the things materiality in respect of amount. टोलरेंस आपका टोलरेंस लेवल आप अपने लेवल पे सेट कर रहे हो क्या आप बिना. If I am talking about कि मेरी 25 यूनिट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है,
मेरी असम के अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स थी जो कि अब नॉन ऑपरेट हो गई, तो आप उनसे कैसे बोलोगे कि वो मटेरियल है या इमटेरियल? मेरे पास सिर्फ ये रिपोर्ट आई टेक्निकल डिपार्टमेंट से कि असम से 2 यूनिट्स जो है वो काम करना बंद कर दिए। अब उसके अंदर एक फुटनोट और चीज है कि उस कंपनी की more than 50% जो प्रोडक्शन थी वो असम के अंदर बनती थी। Now it is considered material, है ना? That's the point here. It is the accounting policy information is expected to be material if user of an entity's financial statement would need it to understand other material informations. मतलब उस यूजर को जो उसका यूजर्स दैट इज स्टेक होल्डर गवर्नमेंट जो भी उसके यूजर्स है उनको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी दूसरी चीज समझने के लिए, तो वो मटेरियल कहलाई जाएगी। पर कोई ऐसी चीज जो कि काम ही नहीं आएगी, बिल्कुल किसी और चीज से कनेक्ट हो रही है ना उसका फाइनल आउटकम आ रहा है, तो वो ये मटेरियल कंक्लूड कर दीजिए। सो ऑन ए लाइटर नोट, जैसे इन्होंने बोला ना कि भाई मेरी आइज में कोई चीज मटेरियल हो सकती है, आपकी आइज में कोई चीज मटेरियल हो सकती है। सो बेसिकली डिपेंड करता है कि भाई आपके चश्मे का नंबर क्या है ना, कि वो आप किस नजरिए से उसको देख रहे हो, आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट चल रहा है। तो दिस इज दैट वन नीड टू डिसाइड। I have just conclude my slide with few examples. An entity is likely to consider accounting policy information material for material transactions. First, entity changed its accounting policy. Entity ने अपना accounting policy change कर दिया during reporting period. वो material अपने आप में माना जाएगा accounting policy जो change हुई। Second, entity chose accounting policy from one or more options permitted by Ind AS. मतलब अगर एक entity ज़्यादा Ind AS जो एक entity Ind AS तो follow करती है, लेकिन it follows multiple, उसके अंदर बहुत सारे multiple Ind AS लग रहे हैं. For example, big company who is having more than 500 crore turnover is in oil industry, or you can say is in another industry, and it has been following 5 to 6 days. Then the choosing that accounting policy, the mentioning that indices is in that accounting policy is also material. Accounting policy was developed in accordance with Ind AS 8. In the absence of any Ind AS, if it is specifically mentioned. Accounting policy relates to an area for which an entity is required to make significant judgment. For example, there is a hypothetical condition in an entity during a year, and management को कोई judgment लेनी पड़ी जो कि कहीं mention नहीं थी। कोई इंडेक्स में कुछ इस तरीके से नहीं बोलता था कि उसके आगे आपको क्या लेना चाहिए, उसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो उन्होंने खुद से जजमेंट ली है, तो उन जजमेंट्स को भी आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा because they are also material. Last is the accounting required for them is complex and user can't understand them without any supporting. That is also material. So again, the entity shall disclose along with material documents, other notes and the judgments. So very nicely presented by Pragyay. In fact, जिस तरीके से इसका presentation skills है, that really need applause from all of us, and that is what we should actually learn from our speakers, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी करते हैं और कल का जैसा इन्होंने presentation मेरे को दिखाया और मैंने देखा भी, तो बिल्कुल किस तरीके से ये चीजों को समराइज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो तो पता चला कि एक ही चीज को आप लगातार रीड कर रहे हो तो वो समझ में नहीं आएगा, जबकि इसके प्रेजेंटेशन से जहां तक मुझे लगा कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि कैसे इसने पहले बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया, कैसे इसने वापस आपको उसको समझाया, तो दिस इज हाउ वन शुड एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्फ. Who is the third speaker? I think. Achha, this is all speakers have now done. So with this, we can now conclude so far as our class is concerned, and we have quiz. So all participants may please stay here for quiz, and our organizers would basically